हेलो एनीडेस्क, आपका नया रिमोट बडी। एनीडेस्क क्या है? ये एक ही कूल सॉफ्टवेयर है, पता है। सोचो ये एक मैजिक विंडो जैसा है, या एक ही स्पेशल डोर जिसे आप खोल सकते हो। आप इस डोर से दूसरे कंप्यूटर में झांक सकते हो। हाँ, एक दूसरा कंप्यूटर जो शायद आपसे बहुत दूर हो, मैलोमील दूर, शायद किसी दूसरे शहर में ही हो। ये बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए सुपर यूजफुल है। बहुत लोग इसे हर रोज यूज करते हैं। वो इसे अपने ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं, काम निपटाने के लिए। वो इसे अपने दोस्तों की ट्रिकी कंप्यूटर प्रॉब्लम्स में हेल्प क्रून के लिए भी यूज करते हैं। ये सच में सबकी लाइफ थोड़ी सिंपलर बना देता है। ये उन टूल्स में से एक है जिसके बिना आपने पहले कैसे काम चलाया, ये सोचकर आपको जल्द ही हैरानी होगी। तो एनीडेस्क आजकल इतना बड़ा डील क्यों है? इतने सारे लोग इसे इतना पसंद और रेकमेंड क्यों करते हैं? वेल, सब व्यू से पहले ये बहुत बहुत फास्ट है। जब आप इसे यूज करते हैं तो ये क्विक और रिस्पॉन्सिव फील होता है, जैसे एक ब्रांड न्यू रेस कार। धीमा और बोरिंग नहीं, जैसे किसी पुरानी भीड़ वाली बस का इंतजार करूं ना, जो कभी टाइम पर नहीं आती। सेकंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपर सेफ है। आपके कंप्यूटर सीक्रेट्स, आपके पर्सनल फाइल्स और आपका इंपॉर्टेंट डेटा सब अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है। कोई बैड गाइज या हैकर्स आपके प्राइवेट स्टफ में आसानी से झांक नहीं सकते जब आप इसे सही तरीके से यूज कर रहे हो। थर्ड, ये लगभग हर तरह के डिवाइस पर काम करता है। आपका विंडोज पीसी, आपके दोस्त का एप्पल मैक कंप्यूटर, यहां तक कि आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन या आपका आईफोन भी। ये इतना फ्लेक्सिबल है जैसे कोई टैलेंटेड जिम्नास्ट कमाल के करतब दिखा रहा हो। ये इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबिलिटी कनेक्शन में शामिल हर किसी के लिए इसे बहुत कन्वीनियंट बनाती है। ये एनीडेस्क के लिए एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट है। चलो मैं आपको एक ही क्विक पिक्चर दिखाता हूं। इमेजिन करो आपकी मम्मी आपको फोन करती है, बेटा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत अजीब मैसेजेस आ रहे हैं, वो कहती है, और आप उनकी आवाज में चिंता सुन सकते हो। आप अपनी जगह बिजी हो और वो आपसे काफी दूर रहती है। इतनी दूर से आप उनकी मदद के लिए क्या कर सकते हो? वेल, एनीडेस्क के साथ आप उनके लिए एक टेक हीरो बन सकते हो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। आप आसानी से इंटरनेट पर उनके कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। आप उनकी स्क्रीन को बिल्कुल वैसे ही देख पाओगे जैसे वो देखती हैं, रियल टाइम में। आप उनके माउस पॉइंटर को भी हिला सकते हो और उनके कीबोर्ड पर उनके लिए टाइप भी कर सकते हो। ये सब जबकि आप घर पर अपनी चेयर पर आराम से बैठे हो। ये बिल्कुल उनके साथ वही होने जैसा है, बिना इतना लंबा सफर किए। कितना कूल है ना सच में। एनीडेस्क आपके काम के मामले में भी एक ही कंप्लीट लाइफ सेवर है। सपोज आपको अर्जेंटली एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फाइल एक ही मीटिंग के लिए चाहिए। वो क्रूशियल फाइल आपके ऑफिस कंप्यूटर पर है, बट ओ नो, आप आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और ऑफिस बंद है। डोंट स्टार्ट टू पैनिक और गेट स्ट्रेस्ड आउट। एनीडेस्क यहाँ है आपका दिन बचाने के लिए। गेट हियर। आप इजीली और क्विकली अपने ऑफिस पीसी से राइट फ्रॉम अपने होम लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। आप देन वो क्रूशियल फाइल ढूंढ सकते हो, उसे अपनी लोकल मशीन पर डाउनलोड कर सकते हो, या इवन वर्क ऑन इट डायरेक्टली ऑन द रिमोट ऑफिस कंप्यूटर। आप अपना इंपॉर्टेंट टास्क बिना किसी अननेसेसरी स्ट्रेस या डिले के फिनिश कर सकते हो। आपका बॉस श्योरली आपकी रिसोर्सफुलनेस से इंप्रेस होगा। आपको इनक्रेडिबली रिलीव्ड फील होगा। ये डेफिनेट विन विन सिचुएशन है फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, रियली। Getting AnyDesk on your Windows 10 PC easy peasy। तो आप कन्विंस्ड हैं कि AnyDesk एक ग्रेट टूल है। आप इसे अपने Windows 10 PC पर राइट नाउ पाना चाहते हैं। That is an excellent decision, my friend। First things first, हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाउनलोड करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने स्मार्टफोन के लिए कोई नया एप्लीकेशन लेते हैं, बट ये पर्टिकुलर वाला आपके बिग कंप्यूटर स्क्रीन के लिए डिजाइन किया गया है। अपने पीसी पर अपना फेवरेट वेब ब्राउजर खोलें। ये गूगल क्रोम हो सकता है, जिसे मेनी पीपल यूज करते हैं, और मे बी आप मोजिला फायरफॉक्स या इवन माइक्रोसॉफ्ट एज प्रेफर करते हैं। एनी ऑफ दीज मॉडर्न वेब ब्राउजर्स इस टास्क के लिए परफेक्टली फाइन काम करेंगे। नाउ एड्रेस बार या सर्च बार में ऑफिशियल एनीडेस्क वेबसाइट पर जा। इसे ढूंढना बहुत इजी है। जस्ट टाइप एनीडेस्क डाउनलोड इनटू द गूगल सर्च बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। वंस आप ऑफिशियल एनीडेस्क वेबसाइट पर लैंड करते हैं, टेक अ मोमेंट टू लुक अराउंड। आपकी आईज क्विकली एक ही बिग, शाइनी और प्रोमिनेंट बटन कैच कर लेंगी। It will probably say something clear like download now or free download or get AnyDesk। Websites usually unimportant download buttons को very obvious और extremely easy to spot for visitors बनाती है। Click firmly on that button। Yes,
Just a simple click with your computer mouse is all it takes. AnyDesk सॉफ्टवेयर का डाउनलोड प्रोसेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। AnyDesk प्रोग्राम फाइल एक्चुअली साइज में क्वाइट स्मॉल है, सो ये आपके कंप्यूटर पर वेरी क्विकली डाउनलोड हो जाएगी। It's not like those massive video game files that can take hours and hours to download. आप probably अपनी cup of hot chai या coffee finish कर लेंगे before it's completely done. After the AnyDesk download is fully complete, आपको downloaded file अपने computer पर ढूंढनी होगी. It is most likely hiding safely in your computer's downloads folder. This is the default location where most web browsers automatically save all the files you download from the internet. The file name will be something very similar to anydesk.x. The exe part at the end means it's an executable file, which is basically a program that can run on Windows. Double-click on this anydesk.x file. This specific action, AnyDesk program itself start kar dega, or, if it's the first time, its installation process. Windows might pop up a security question asking something like, "Are you sure you want to run this file from an unknown publisher?" Just click yes or run. Don't you worry about a thing. AnyDesk is a very safe and widely trusted program. Now the main AnyDesk window आपके computer screen पर appear होगी. And here's some really good news for you, which makes things even simpler. You don't always need to go through a full, formal installation process to use AnyDesk. You can actually run AnyDesk directly just by opening the downloaded X file each time you need it. This is commonly known as running the software in portable mode. It's very convenient for quick, one-time uses, or if you are on a computer where you don't have installation rights. However, if you plan to use AnyDesk regularly, it is generally better to install it properly on your system. Look for an option within the AnyDesk window that says something like, "Install AnyDesk on this computer." Click on it, and then click on the Accept and Install button. The entire installation will be finished in less than a minute. See? It's super simple, with no complicated steps or confusing options at all. Connecting Worlds, your first remote session. Alright, AnyDesk is now on your PC and all set up, ready to go into action. Take a good look at the AnyDesk window that is open on your screen. You will see a special number displayed quite prominently, usually at the top or side. This number is called your address, or sometimes it is labeled as this desk or AnyDesk ID. It's basically like your computer's unique phone number, but specifically for making and receiving AnyDesk connections. This address is very, very important, so make a mental note of it, or even write it down if you think you might need to share it later. If someone else wants to connect to your computer remotely, you will need to give them this specific number. Similarly, if you want to connect to their computer, you will need to get their AnyDesk address from them. It's all about securely sharing these unique numerical addresses. Now let's say you want to initiate a connection to another computer. Perhaps it's your friend's PC because they need some technical help, or maybe it's your work computer so you can access some files. On your own, AnyDesk window, look carefully for an input box or a field. This box is usually labeled clearly with text like remote desk or enter remote address, or sometimes enter AnyDesk ID of remote computer. This is the exact spot where you need to type the AnyDesk address of the other computer, the computer that you wish to access and control remotely. Be very careful and please double check the number you enter into this box. Typing even one single digit incorrectly means you might accidentally try to connect to a completely different and unknown computer. That could be a little bit embarrassing or confusing for everyone. After you have carefully and accurately typed the other computer's AnyDesk address into the designated field, you need to click the Connect button. This button is usually located right next to the address field, making it easy to find. Alternatively, you can simply press the Enter key on your keyboard after typing the address. Now you need to be a little patient and wait for a few seconds. On the other computer, the one you are trying to connect to, a message or a notification window will pop up on their screen. This message will inform the person on the other side that you are attempting to establish a remote connection to their machine. They will then need to click an Accept button or a similar confirmation on their screen. This is a very crucial security step. It ensures that no strangers or unauthorized individuals can just barge into the computer without your explicit permission and consent. Once the person on the other side clicks their Accept button, they will launch the advanced feeding requires like a trick. So the computer's
smooth sailing tips, tricks, and fixing little hiccups. क्या आप चाहते हैं कि आपके AnyDesk remote sessions बिल्कुल ताजे मक्खन जैसे स्मूथ हों? Well, my friend, एक good और stable internet connection इसके लिए single most important ingredient है. Think of your internet connection as a wide, clear highway for all the data that needs to travel between the two computers. If your internet is slow, unreliable, or choppy, your AnyDesk experience might feel laggy, slow, and frustrating. It would be like trying to drive a high-performance sports car on a very bumpy and narrow village road. So, whenever it is possible, try to use a dependable and fast internet connection. Wi-Fi is generally okay and convenient for most everyday uses. But a wired Ethernet, LAN connection, plugged directly from your computer into your router, is often much better and more stable, especially for important remote work or for very long sessions. It really can make a quite noticeable difference in performance. AnyDesk is quite a smart piece of software, but it also generously gives you some cool and useful settings that you can play around with and adjust. You can easily change the display quality of the remote session to suit your needs and internet speed. If your internet connection is a little bit on the slow side, you can lower the quality settings within AnyDesk. This action will make the remote screen look a bit less sharp or detailed, perhaps a bit more pixelated, but it will run much faster and feel more responsive to your mouse and keyboard actions. Conversely, if you are lucky enough to have a super fast and stable internet connection, you can crank up the quality settings to the maximum for a crystal clear, high-definition view of the remote desktop. You can also control various session permissions, like allowing or disallowing file transfers between the computers, or disabling the remote keyboard and mouse input if needed. Take some time to explore the settings menu. It's usually quite intuitive and user-friendly. Sometimes, even when you are using the best software available, things can go a little bit sideways, or not as planned. Please don't panic if you face an issue while using AnyDesk. It happens to everyone from time to time. For example, maybe you find that you are unable to connect to the remote computer successfully. First, carefully double-check that AnyDesk address you entered. Is it absolutely correct? Did you perhaps type it inaccurately, maybe mistyping a digit? Also, check your own internet connection. Is it working properly and are you online? Sometimes your computer's built-in firewall software, like the Windows firewall or your third-party antivirus program, might be a little bit overprotective and could be blocking AnyDesk's communication. You might need to go into their specific settings and add AnyDesk as a trusted application, or create an exception for it, essentially telling the firewall, AnyDesk is a friend, please let it pass through. Another common little hiccup you might encounter is seeing a message like waiting for image that stays on the screen for a long time, or the connection might feel very stuck and unresponsive. This usually indicates that AnyDesk is trying its very best to show you the remote screen, but the internet connection between the two computers is struggling to keep up with the data flow. Again, the first thing to suspect and check is often the internet speed, not just on your computer, but also on the remote computer. Sometimes, a simple restart of the AnyDesk application on both ends of the connection can magically solve the problem. Or, you can always try the classic time-tested IT support trick restarting both computers completely. It's quite surprising.